I've answered all the questions. Now I would keep the floor open for further questions and then we'll end the session. No, I don't, Aditya. Guys, you can unmute yourself also. How to select domains, I've told you before also, Aman. What you have to do simply is ask the people of the senior authorities, probably the execs. Don't ask the articles. We don't know much about the domain because we haven't worked that long. Ask the executives. They will tell you exactly what kind of work they do. Depends upon your interest. If you have interest in a particular domain, firstly, develop an interest in the subject. Then ask the people who are working in those domains, understand what kind of work they do. If that excites you, then apply. That's how you choose between domains. Yes, Neha, if it's stat audit, they won't ask you if it's internal audit, they will ask you TDS, TCS, GST also. Harshit, I already explained, I will upload on YouTube the recording about your articleship. And if you want something about articleship, tell me exactly what you want. A brief introduction, I'm not understanding what you want to know about articleship. Certification courses only which are relevant to Big Four articleship, only that you should do. Excel is relevant, Power BI, all these courses are relevant. Karan, I think Power BI, Tally not for Big Fours, but yes, for mid-size, you should also know Tally. Yes, Aman, you should go for GST, but also try to understand the kind of work scope your seniors have. Then maybe you will be able to make a better informed decision. Any other questions? Anybody? दी ऐसा बोला जाता है कि बिग फोर में होने के बाद तुम अपने पर्सनल लाइफ बिल्कुल एंजॉय नहीं कर पाओगे। सच में ऐसा होता है क्या? आप तो बिग फोर में हो, आप बता सकते हो। मैं अभी सेशन ले रही हूँ, आई एम एंजॉयिंग माई पर्सनल लाइफ। ऐसा नहीं है, यू कैन एंजॉय एवरीथिंग यू वांट। हाँ वही। Neha, I told about internships. You can simply just apply for internships wherever there's a vacancy. You can find vacancies on LinkedIn or probably on the company's websites. You can apply for internships. It's all right. Yeah, you can apply in the different, suppose you want to apply for different domains in the same company, you can apply. It's okay. Yes, they add a plus point to your Big Four application if you have certifications. Anybody else? Harshit, for that, it will take a lot of time to explain about articleship. I will upload a video for the same. Uh, I don't think there's a time limit for general actually. It's the same. Agar everybody is staying till 10, everybody will stay till 10. Yeah, you can try foreign certification. It will not take more than 1 hour. You can do that. I've talked about foreign certifications on LinkedIn a lot. You can find my posts for that. Yeah, you can apply for multiple locations in the same firm, Muskan. Doesn't matter. Harshit, I will upload a video. It's already been recorded. Probably in this week, that video will come out. No worries, Muskan. Any other questions anybody has? Aditya, you should check their website. On their website, they might have mentioned something about their clients. And you can ask the HR openly. If they're not seeing much, of course, they don't have salaried clients. I have no idea about Bangalore. I've just moved to Bangalore. You should ask somebody who's in Bangalore for a long time. Khushi, understand one thing in India, there is nothing as overtime. They don't provide cabs. You do have shuttle till the metro, but further you don't have anything else.
Yeah, you can add in your CV. See, ultimately, even if the other people are adding it, it's okay. At least you're standing out. At least you are showcasing to the HR that you are participative in nature. Harshit, yes, some HRs do ask. HR, no, not HRs. The HRs don't ask. The managers, directors, they may ask. But even if you don't know, it's okay. Like some basic questions like V lookup, X lookup, pivot table, all this they ask. But I don't think this is how they will ask anything. All these questions you should know. You've done that in IT. Anything else, guys? We'll end the session if there are no more queries. Yeah, you should add it to your CV, Aman. FAQs, which domain do you want FAQs? If you have work experience, then it can go up to 1.5 page. Neha, I would recommend don't do it because if you're asked questions about it, what will you say? That is the problem. Don't do something which you weren't 100% committed to because in your interviews, definitely you will be asked questions regarding that. Any more questions, guys? See, I'm from Chandigarh. I can only tell about Chandigarh. I cannot tell about any other city or state. So you will have to contact people who are based out of that city or state. दी जैसे मैंने अभी सर्टिफिक बोलो। मैं कह रही हूँ कि मैंने अभी सर्टिफिकेशन कोर्स नहीं किया है तो लेकिन बाद में करूँगी तो फिर मैं अपनी सीवी में ऐड करके फिर एडिट करके भेज सकती हूँ ना सर, अपडेटेड सीवी। आई विल रिकमेंड एक ही सीवी यूज करो। टेक योर टाइम। एक दो दिन वेट करोगे तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट एक ही बार सीवी भेजो, बार बार अपडेट मत भेजना। शुड वी नहीं, जैसे अप्लाई? सेम फर्म को नहीं कह रही मैं, मतलब किसी और फर्म को, सेम फर्म को नहीं बोल रही। हाँ, फिर कर सकते हो, इट्स योर चॉइस। ठीक है। You should wait for results, Muskan, as it is 2 दिन तो बचे हैं. Then they maybe won't have listed clients, Aditya. That's why. See, for HR round, you will be asked brief introduction of yourself, questions like why CA, why our company, all these questions, non-technical questions. Generally, there will be why not another company, why our company, then why this domain, why not that domain. Then you may be questioned about your CV. CV related, you'll have tons of questions. Then your personality related, they may give you some case study and they will be like, how will you handle this situation? How will you handle that? Then they may ask you a lot about your time management skills. All these things you may be asked. IFRS, no, they won't ask. Even if they would ask, you can just simply say that it wasn't in your syllabus. That's what I did. I got asked India's. I told them that no, it wasn't in our syllabus. If it's not in our syllabus, you can simply say it's not in our syllabus. Okay, guys, 5 minutes more and then we'll end the session. और अनम्यूट करके बोल दो। आई डोंट थिंक कि अ, अभी टैक्सी क्योंकि अभी आई एम नॉट स्पीकिंग, नो, अनम्यूट करके बोल सकते हो, इट्स ओके। या दे विल आस्क क्वेश्चंस अबाउट इट। एनीथिंग यू मेंशन इन योर सीवी दे विल आस्क क्वेश्चंस अबाउट इट। थैंक यू।
Depends upon the situation, Harshit. Yeah, I'll review your CV. Send it to me over WhatsApp. If you have applied via email, no, if you have applied, then you can be referred if you have simply just mailed. No worries. Thank you so much, everybody. हेलो। Yes? मैम मयंक दिस साइड। Yeah. मैम मेरे अभी मैंने जैन अटेम्प्ट दिया था बोथ ग्रुप इंटर का। और Okay. अभी रिजल्ट्स मेरे आने वाले हैं 2 दिन बाद। Hmm. तो मुझे एक्सपेक्टेड है कि शायद मेरा एक ग्रुप निकल जाएगा, दूसरा शायद कुछ नंबरों से रह जाएगा। Okay. अ, तो अब जो मेरा अटेम्प्ट जो मेरी आर्टिकलशिप स्टार्ट होगी, जो मुझे एक्सपेक्टेड है कि मेरी जून जुलाई में स्टार्ट होगी। Hmm. तो मैं मेरा जो इंटरेस्ट है उसमें मेरा इंटरेस्ट जीएसटी में है, टैक्स मतलब बेसिकली टैक्स में। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे कोई इंटरव्यू होता है, कोई भी किसी हम जॉब प्रोफाइल के लिए अप्लाई करते हैं, तो उसमें Hmm. जो हम रेज्यूमे डाल रहे हैं, रेज्यूमे में Hmm. मैं जॉब अगर जो वैकेंसी निकली है वो ऑडिट के लिए निकली है सपोज, Hmm. और मुझे टैक्स में इंटरेस्ट है, तो Hmm. मैं उस जॉब के लिए अप्लाई करूंगा। अगर मैं जॉब के लिए अप्लाई करूंगा तो मेरा जो पहली बात तो ये जो मेरा करियर ऑब्जेक्टिव है उसमें टैक्स ओरिएंटेड लिखूं या फिर मल्टीपल डोमेन लिखूं, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव जो है कि मुझे बिग फोर में नहीं जाना, मुझे किसी पर्टिकुलर फील्ड में नहीं जाना। भले ही मेरा टैक्स में इंटरेस्ट है, मुझे सीखना सब है। तो मल्टीपल डोमेन वाली बात है एक तरीके से। तो तो अगर कैरियर एक ऑब्जेक्टिव जॉब में वेक लिखो ही ना, उसमें उसमें लिखो ही मत किस सब्जेक्ट के बारे में, कुछ भी मत लिखो उसमें, सिर्फ अपना जनरल कैरियर ऑब्जेक्टिव लिखो। अच्छा, तो उसमें इस तरह से लिख दूं कि आई वांट टू गेन एक्सपीरियंस इन मल्टीपल हाँ, कि डोमेन्स, ऐसे करके। डायनेमिक रोल, अपॉर्चुनिटीज, हाँ। ये सब कुछ लिख दो। हम्म। इफ यू वांट टू गेट इनटू मिड साइज, इवन इफ यू वांट टू गेट इनटू बिग फोर, जरूरत नहीं होती लिखने की। ओके। या तो अगर मैंने मल्टीपल डोमेन लिख दिया, अब मैंने वैकेंसी निकली थी ऑडिट की, इंटरव्यू हुआ, तो इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि तुम्हें किस रोल में जाना है। मतलब उन्होंने ऑडिट के लिए निकाली थी, लेकिन उन्होंने मेरे से सामने से फिर इंटरव्यू में पूछा कि आपको किस डोमेन में आर्टिकलशिप करनी है। अब मैं क्या बोलूं, क्योंकि उन्होंने ऑडिट के लिए वैकेंसी निकाली, लेकिन अब वो मेरे से सामने से खुद पूछ रहे हैं। तो मैं क्या क्या बोलना चाहिए मुझे इस उस टाइम सिनेरियो पे में। इसलिए पूछते हैं बिकॉज दे वांट टू रियली नो दैट डू you even want to be in this company in this domain or not. That is why they ask you. It's not something that they want to inquire from you. They are just testing you. Do you really want to be in the company in this domain or not? That is why they ask you. And as it is, even since you want experience in all domains, I'm not like, I don't think that the mid-sized firms HR will ask you which domain you want to get into. This question is asked by only the big fours. Ruchika, we ओके। don't write in the CV which domain we want to get into. We write in the cover letter. In the cover letter, in the subject line, we write. Okay, Mayank, any ओके। other question? नो थैंक यू। No worries. Guys, anybody has any other question? Otherwise, we'll end the session. नो मैम, थैंक यू सो मच। Thank you. All right, okay. So we'll end the session. I'll let you know whenever I'll be able to upload. I'll text you on WhatsApp. Thank you, everybody. Bye-bye. Take care. थैंक यू। Okay, there's one message. With the due date, which due date are you talking about, Muskan? Yeah, it matters, Khushi. Muskan, they tell you on the mail till when is the assessment test link available. That's how you know. The okay. See the assessment test, it is sent to particular people only. Suppose if you have sent your CV, if you're shortlisted, only then you are sent that assessment test link. And it's written that it's valid till today, it's valid till tomorrow. It's written in the mail only by the company.
No worries. Bye, guys. Take मैम Yeah. मैम वन मोर थिंग, Uh-huh. कुछ फर्म्स ऐसे करती हैं, जैसे इंटरव्यू में बता देती, इंटरव्यू में कहती है कि हम आपको ट्रांसफर दे देंगे। जो आर्टिकल है वो 1 डेढ़ साल बाद चाहता है कि वो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में चला जाए, आईसीआई की तरफ से अलाउड भी है। तो उसमें, इस केस में अगर वो लेकिन फिर बाद में फर्म कह रही है कि नहीं हम तुम्हें ट्रांसफर नहीं देंगे, तो आर्टिकल कह रहा है कि नहीं आपने तो इंटरव्यू में कहा था, लेकिन अब फर्म मना कर रही है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? क्योंकि मेरा एक दोस्त है, उसके साथ ऐसे ही हो रहा है, और वो अब फंसा हुआ है कि वो छोड़ भी नहीं डिपेंड सकता। करता है रीजन क्या है। अगर अगर रीजन ये है कि सीजन चल रहा है ऑडिट का या टैक्स का और काम बहुत है, तो फिर ऑफ कोर्स है ना, नो फर्म विल बी रेडी टू लीव यू। यू गिव फॉर्मल नोटिस एंड पहले ही एचआर से पूछ लो व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग द ट्रांसफर, बिकॉज in Big Four you have to give a 3 month notice, so it depends upon the firm. You ask in the initial stage only what is the notice period, and you give the notice formally, as simple as that. नोटिस दे दिया, जाना बंद कर दो, और क्या। उसके बाद तुम्हें ट्रांसफर केस पे तुम्हें सिग्नेचर ही चाहिए। if something bad happens, you have ICI to protect you. You raise a query on the ICAI Sahayata thing, and you're good to go. ओके मैम। Yeah. Thank you, everybody. Bye. Yeah, Harshit, send me your CV on LinkedIn. I'll check.